सो हेलो गाइस, तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल कल तो चल ही चुका है कि वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक कस्टमर ने मुझे ये वाला एम्पलीफायर दिया था जो कि बहुत पुराना है। आप सामने देख सकते हो, जो कैसेट लगता था वो यहाँ पे था, ठीक है। तो ये बहुत पुराना एम्पलीफायर था। तो वो कह रहा था कि इसके अंदर जो भी सामान है वो यूज़ करके और कुछ नया लगा के एक मुझे नया एम्पलीफायर बना दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, बना देंगे। वो लेके आ गए और मैंने यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एम्पलीफायर बनाया। तो इसके अंदर अंदर की साइड देख सकते हो, वो एम्पलीफायर के अंदर जो 3055 का बोर्ड है वो लगा हुआ है 5 ट्रांजिस्टर वाला। और जो ट्रांसफार्मर है वो 18018 आपका 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। तो यही दोनों ठीक ठाक मुझे लगा, तो मैं ये दोनों की यूज़ किया। और इसका जो बेस लेवल का सेक्शन था वो ख़राब था, क्वालिटी घटिया आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका बेस लेवल का सेक्शन ही हटा देते और मैंने नया बेस लेवल बोर्ड लगाया, जो कि ये वाला बेस लेवल बोर्ड है। नीचे इसका रेगुलेटर आईसी वगैरह लगा हुआ है नीचे की साइड, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए ये बीटी बोर्ड, ठीक है। तो इन सब को यूज़ करके एम्पलीफायर मैं रेडी कर लिया और कुछ देर बाद ये डिलीवरी हो जाएगा। अभी लास्ट में साउंड टेस्ट तो होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास भी अगर ऐसा पुराना टाइप के एम्पलीफायर है, आप लोग चाहते हो कि उसको अपग्रेड करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी साउंड टेस्ट की तरफ बढ़ने के पहले ये एम्पलीफायर का रेडी होने का वीडियो आप लोग थोड़ा देख लो फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है। फिर साउंड टेस्ट में मिलते हैं। Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter. Try to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you'll see what you made of me. Found my enemies. You are to release in the dead of night. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control it. एम्पलीफायर बिल्ड की वीडियो देख लिया, अभी बढ़ते हैं साउंड टेस्ट की तरफ।
साउंड टेस्ट आप लोगों ने सुन लिया है, साउंड क्वालिटी कैसा लगा कमेंट में बताना। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसे टाइप का पुराना एम्पलीफायर है, आप अगर चाहते हो कि उसको आप अपग्रेड करो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए चलते हो दोस्तों, दुआ में याद